इतना ठीक है ना। और इसको भी अंदर
Good afternoon, everyone. First and foremost, I'd like to extend an extremely warm welcome to each and every person in this room. We've all come together today for the start of something special, for the start of something that could give back so much to this beautiful state of Uttar Pradesh. अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अगर if you talk about a few shining lights that have gone on to play for the country, you've got the likes of Suresh Raina, Mohammad Kaif, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, and the latest in that list, Rinku Singh. Who remembers what Rinku did versus Gujarat Titans in the last IPL? That was massive. Now imagine, आप ये सोचिए कि रिंकू जैसे खिलाड़ी को अगर बचपन में एक मंच नहीं मिलता तो क्या आज हम रिंकू सिंह की बात कर रहे होते? 50-50, hit and miss, 100%. You'll agree with me on that. All of you are sports people, you understand that. There's a very nice quote that goes on to say this: the future belongs to those that believe in the beauty of their own dreams. Today we're coming together for the first steps for something that could pave the way for the coming generations to dream and dream big. कोशिश, हौसला, उम्मीद और पहला कदम ही नई शुरुआत की नींव होती है। और आज वो पहला कदम लिया जा रहा है। That पहला कदम that is going to change the landscape of Uttar Pradesh cricket forever. Ladies and gentlemen, please put your hands together for UP T20. Now we have a busy day for you today. Lots of things to reveal, lots of unveilings going on. And the later half of the day will see a draft, which will see all of you in action as well, getting your teams together. But before we start anything, it's important that we acknowledge the support, the vision of people without whom UP T20 would not be possible. So kindly put your hands together, firstly, for Mr. Rajiv Shukla, Vice President, BCCI. Thank you, sir. Shri D.S. Chauhan, Chairman, Governing Council. Mr. Mohammad Fahim, Vice President, UPCA. Thank you, sir. Mr. Arvind Shrivastava, Honorary Secretary, Uttar Pradesh Cricket Association. Mr. Prem Manohar Gupta, Honorary Treasurer. Mr. Riyasat Ali, Joint Secretary. And finally, Mr. Abdul Wahab, Member of the Governing Council. Thank you so much, sir. First up, I'd like to invite Shri D.S. Chauhan, Chairman, Governing Council. Sir, if you could come up and say a few words. आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के गार्जियन, उत्तर प्रदेश क्रिकेट को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेड लीग उत्तर प्रदेश क्रिकेट को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया है। उनकी ही ये प्रेरणा थी, उनका ये विजन था, जिसके आधार पर यूपी T20 लीग का जो है वो सपना हम लोगों ने
उनके दिशा निर्देश पर जमीन पर उतारा है। यूपी T20 इस समय लाया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है हर प्रकार की गतिविधियों के लिए, और खेल इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी T20 का जो कंसेप्ट है उससे यूपी में क्रिकेट कैसे खेली जाती है इसमें एक अमूलचूल परिवर्तन होगा। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट आप सब लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के सभी कोनों में ये क्रिकेट जा रही है। तो हमारे पास पूर्वांचल से गोरखपुर की टीम है, बनारस की टीम है, मध्य उत्तर प्रदेश में हमारे पास लखनऊ और कानपुर की टीम है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे पास में गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और मेरठ की टीम है। दूसरा, ये जो प्लेटफॉर्म देता है, ये फॉर्मेट जो है, वो जो हमारे गरीब घर के बच्चे हैं उनको ये बहुत ही अप्रत्याशित मौका देगा अपने आप को क्रिकेट जगत में स्थापित करने के लिए, और अपनी प्रतिभा के बल पर ऊंची छलांग लगाने का मौका देगा, जिसमें वो आईपीएल खेल सकेंगे और भारतीय टीम में खेल सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सपना भी वो साकार कर सकेंगे। हमारे पास ऐसी अनेकों कहानियां हैं उत्तर प्रदेश में जहां बहुत ही मजबूर घर से लड़के आए, अपने मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए राजीव जी ने ये यूपी T20 लीग को जो है स्थापित किया। उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमें इस टूर्नामेंट की जो परमिशंस थी बीसीसीआई की तरफ से, बीसीसीआई में हमारा बहुत ही अच्छा परिवर्तन हुआ है और हमें इसकी अनुमति बीसीसीआई से बहुत जल्दी तत्काल मिल गई। हमारा जैसे ही प्रपोजल गया, जो उनके क्वेरीज थे हमने आंसर किए, और आज जिसकी बदौलत जो है हमारे पास में आज ये टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश की जनता को देने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी टीम ओनर्स, खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, हमारे यूपीसीए के सभी ऑफिशियल्स, हमारे सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी, हमारे ट्रेजरर प्रेम मनोहर गुप्ता जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स, इन सब के कोऑपरेशन से, आप सबके इससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट यूपी की जनता को दे सकेंगे, जहां क्रिकेट जो है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। Thank you so much, sir. Now it's time to reveal the logo of UP T20 and also the anthem of UP T20. Could we have the logo and anthem played out, please? गाथा में ऐसा भूचाल ले आएंगे, यूपी के चप्पे चप्पे बस यही बात दोहराएंगे। अब की बार के बल्लाधारी अंतरिक्ष तर्राएंगे, गेंद धरा पे गिरे जहां भीषण विस्फोट हो जाएंगे। आज मचेगा रे बवाल, आज मचेगा रे बवाल, आज मचेगा रे बवाल, आज मचेगा रे बवाल। हर कोने में हम छा जाएं, अब की बारी अपनी बारी। हवा बदल दे तूफान की, करे जुठाने इच्छाधारी है।
T20 की गाथा में ऐसा भूचाल ले आएंगे, यूपी के चप्पे चप्पे बस यही बात दोहराएंगे। अब की बार के बल्लाधारी अंतरिक्ष तर्राएंगे, गेंद धरा पे गिरे जहां भी क्षण विस्फोट हो जाएंगे। आज मचेगा रे बवाल, आज मचेगा रे बवाल, आज मचेगा रे बवाल, आज मचेगा रे बवाल। Brilliant, wasn't that? मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली का लड़का हूं जी। मैं काफ़ी खेल कूद में रहता था, फुटबॉल खेलता था। तो यूपी के काफ़ी लड़कों के साथ फुटबॉल खेला है, और एक शब्द जो वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो बवाल ही है। बवाल मचाते हैं और बवाल शब्द इस्तेमाल करते हैं, which is rightly apt for the anthem अब मचेगा बवाल, which will be played out across households. We're hoping everyone is going to take to it once UP T20 starts in a few days. It's time now to unveil the trophy that 6 teams, all you 6 teams will be vying for. But before that, may I please invite on stage Shri Rajiv Shukla. So if you could come up and say a few words, please. Chairman of UP T20 Governing Council, Mr. D.S. Chauhan, the office bearers of UP Cricket Association, Mr. Fahim Bhai, Arvind Srivastav ji, Riyasat Saab, Prem Manohar Gupta ji और वहाब साहब, हमारे UPCA के तमाम मेंबर्स जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, फ्रेंचाइजी और उनकी टीम, मीडिया के लोग और हमारे यूपीसी के सीईओ और उनका सारा स्टाफ। तो एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ऑल द वे द लोगो लॉन्च एंड ट्रॉफी अनवेलिंग ऑफ यूपी T20 लीग। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, इट्स ट्राइस्ड विद डेस्टिनी, इट हैड टू हैपन। We had been planning it for long, several years, that we should launch our own league. Reason being that there was a massive demand from all the quarters that UP is a state of 25 crores and we have got only one team. So out of thousands of players, aspirants, those who want to play for India, they were deprived because you can pick up only a team of 15 members. Not more than that. It's a one unit, one state, despite of having a very colossal population. So it was a cumbersome job for all of us to accommodate more and more players and provide them opportunity to display their talent, to hasten their talent. That was the major issue. And we were not able to figure out how to accommodate all those players. And poor players, they come from very humble background. That was the major reason behind it. So we thought of launching this league. And I'm delighted, I'm thrilled, I'm flabbergasted that today the league is being launched and everybody is putting in efforts. Our franchisee, they are trying their level best. Our management team, which we have engaged, they are also working day and night tirelessly and trying to put up the best league of the state. So far, we are ahead of all the states. Several states, Tamil Nadu League, Karnataka League, they were the beginners. They started it. But our league from day one is way ahead from them. So which is good. But look at, from Tamil Nadu League, Karnataka League, they produce number of players who were not in the BCCI list, but now they are playing for India. And there are several names which I would not like to say, but of course, they are product of the state league. So similarly, this league is also going to provide a kind of pipeline
which will be supplying the best talent from UP to the Team India also. They can make it to Team India also. They can be part of international squad. So all this is going to happen shortly after this league is launched. This time we have got paucity of time because it was decided in a very short span of time, and we going to launch the league from 30th of August, and after 30th of August the tournament will be up to 16th of September, because after that 17th there is a final of Asia Cup, then the World Cup is going to come, so need to vacate the ground, especially the Lucknow ground. We'll have to keep, it will be handed over to BCCI or ICC for that purpose, so those teams can come. So I'm really happy that the league is being launched, and lot many players, roughly around 150 players will get an opportunity to participate in the league. Each franchisee will be having a squad of 25 people. This year we're going to have a draft system by which players will be given. Auction thing maybe next year we can plan it. So it's a beginning. So I need blessings of all of you. BCCI is too delighted to, approve this league for UP. एक चीज मैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि लगातार हम लोग क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गालियाँ खाते हैं, आलोचना होती रहती है, तो पार्ट है। जैसे राजनीति में होता है आलोचना होती रहती है, वैसी जो है इसमें भी आलोचना होती रहती है। कुछ भी करो आपकी आलोचना होगी, लेकिन आप देखो ना उत्तर प्रदेश क्रिकेट में पिछले कुछ दशकों से, 1.5 दशक से कितना हुआ कि कहाँ पहले गोपाल शर्मा खाली उत्तर प्रदेश से टीम इंडिया में आए थे। इसके बाद पिछले 10-15 सालों में कितने प्लेयर्स जो है इंटरनेशनल टीम, ऐसी अब कोई भारत की टीम नहीं बनती जिसमें उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी ना हो। तो खिलाड़ियों को पुश करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये काम चल ही रहा। इसके अलावा हमने जो है एग्रीमेंट्स किए, ग्रीन पार्क का एग्रीमेंट किया जो हेरिटेज स्टेडियम है, हमने इकाना का स्टेडियम किया जो है एक अहमदाबाद के बाद सबसे अच्छा स्टेडियम माना जाता है। हम बनारस में एक स्टेडियम बना रहे हैं और उसके लिए सब जमीन वगैरह अधिकृत हो गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सबके सहयोग से हमें जमीन मिल गई। उसमें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 400 करोड़ का स्टेडियम बनाने जा रही है, जो उसका अपना स्टेडियम होगा। तो हमारे पास ये 3 ग्राउंड हो जाएंगे। फिर हम पश्चिम में भी एक ग्राउंड की जो है परिकल्पना कर रहे हैं, उस पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूपी तो शुरू होता है नोएडा से और जाता है बलिया तक, बड़ा लंबा है। तो हमें इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश जैसा चौहान साहब ने कहा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सबका ख्याल रखना पड़ता है कि सबको। तो इस तरह से ये करके कर रहे हैं। अब देखिए आप, विश्व कप हम यहाँ ले आए, तमाम जो है इन सबके बावजूद IPL हम यूपी के ले आए, यूपी में IPL ले आए, और वो भी सबसे महंगा IPL 7,000 करोड़ की टीम जिन्होंने खरीदी हुई यूपी में आए, वहाँ पे लेके महिला IPL हम ले आए, WPL जिसको बोलते हैं विमेंस प्रीमियर लीग, वो हम ले आए, और हमारी अब यूपी लीग शुरू हो रही है। तो इस तरह से इतनी चीज़ें हम यहाँ को प्रोत्साहित, क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें सहयोग चाहिए, खास तौर से मीडिया बंधुओं का। बड़ा मजा आता, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, आलोचना लिखने में, खिलाफ लिखने में बड़ा आनंद आता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। सुबह से ही जो विचार शुरू हो जाते कि कैसे किसी चीज़ का कुछ निकालो और ये करो। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। कुछ दिन ये अपनी माइंडसेट जो है ना, उसको एक तरफ रख के हमारा सहयोग करो। यही मैं अनुरोध और प्रार्थना आप लोगों से कर सकता हूँ कि इन सब चीज़ें इतनी हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका सहयोग हमें बहुत चाहिए होगा। और हमारे फ्रेंचाइजी यहाँ पे हैं, सारे अच्छे फ्रेंचाइजी हैं जो अभी तक सेलेक्ट हुए हैं, सबका क्रिकेट के प्रति पैशन है। दे आर वेरी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड दे रियली वर्क टू प्रमोट क्रिकेट, टू एनहेंस क्रिकेट एंड टू प्रोवाइड plethora of opportunities to the players of the state. So it's not a commercial activity. I want to make it very clear. It's not a commercial activity. Actually, everything is being plowed back, will be plowed back, shall be plowed back in development of cricket itself. So I think it should not be considered as commercial activity. It's only to showcase
the talent of Uttar Pradesh to the world. That's the whole goal, whole purpose. So I would request our friends, media friends, everybody, that they should, put their all efforts, all endeavors to promote this league. Thank you, thanks a lot for coming here. And once again, I would like to thank and welcome everybody out here. Thank you, thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. If I could request you to please be on stage for the unveiling of the trophy, please. That's the digital buzzer that we have. If you could press it. Hanji, sir. If you could just press it, the unveiling of the trophy will happen. Hanji. And with that, we're going to be unveiling the trophy of UP T20. 1, 2, 3. Please put your hands together once again for the trophy, and also put your hands together for Shri D.S. Chauhan, Chairman, Governing Council. Six teams will be vying for that beautiful piece of silverware. 6 teams that are going to be shaping the future of UP cricket forever. Thank you, sir. Thank you so much. Now that we've unveiled the logo, we've unveiled the anthem, we've unveiled the trophy that everyone is going to be playing for, it's time now to unveil the teams. The 6 teams that will be making up the inaugural edition of the UP T20. So please put your hands together as we welcome the teams on stage. First up, I'd like to call on stage members of the Gorakhpur Lions. Put your hands together for the Gorakhpur Lions. That's their jersey, the jersey that they'll be wearing in this inaugural edition. It's got a bit of orange, if I can see. It's got a bit of orange, it's got a bit of blue in it. Reminds me of the India jersey at that last World Cup. They've got the lion on the logo as well. Here are the people that will be taking care of the first team in this UP T20, the Gorakhpur Lions. Thank you, gentlemen. Thank you, gentlemen. Thank you so much. Time now to call the second team on stage. They are the Kanpur Superstars. That's the logo for the Kanpur Superstars. Hoping to build superstars in the future. Thank you so much for coming on stage, sir. Could we also see their jersey, please? An all red jersey with a bit of golden on it. Will be competing in this inaugural edition of the UP T20, the Kanpur Superstars. Thank you, sir. Thank you so much for coming on stage. Team number 3 that we'd like to call on the stage now, the Kashi Rudras. Their logo has a tinge of black, a bit of orange in it. The Kashi Rudras.
जाएंगे. That's the Kashi Rudras for you. Could we have the jersey on stage as well, please? All black with a bit of fire. Hoping to add some much needed firepower in this inaugural edition of the UP20. Ladies and gentlemen, the Kashi Rudras. Thank you so much. They're hoping that name will change with the superstar's name in this coming edition. That's the aim of this league. That's what Sir said in his address as well. Time to call on team number 4, the team from this city itself. Lucknow Falcons. Nawabi andaz, Nawabi tarika khelne ka, Lucknow Falcons in front of you, and true to their name, they've got that falcon on their logo. It's got a tinge of purple, a bit of white, a bit of yellow. The Lucknow Falcons. And that's the jersey for you, all black with a bit of purple. The Lucknow Falcons hoping to fly high in this inaugural edition of UPT20. Thank you so much for that. Time to call on team number 5, and they are the Meerut Mavericks. Please put your hands together for the Meerut Mavericks. They've got the Indian flag on it as well, a bit of red, a bit of purple, a bit of orange. The Meerut Mavericks for you, ladies and gentlemen. Now let's see what their jersey is looking like. It's got blue, it's a beautiful looking blue. Ladies and gentlemen, the Meerut Mavericks. And finally, let's call on stage team number 6 that will make up all the teams in the UPT20. Please put your hands together for the Noida Super Kings. There are the Noida Super Kings. That's the logo for the Noida Super Kings. A bit of green and it's looking really nice, sir. Can we see the jersey as well for the Noida Super Kings? Yellow, green, red. That is the Noida Super Kings for you. Thank you, sir. Once again, please put our hands together once again for all the 6 teams that will be competing in this first edition of the UPT20. Right, so we've seen the jerseys right now. You've seen some nice colors as well. It's time to actually see those jerseys. Before that, we're also having the trophies right here with us. The 6 teams will be vying for the trophy. And as I call on members to come and collect your jerseys, the team owners to collect your jerseys, may I just request one team member to come on stage and collect the jersey. And I'll start going in the same order as well. There it is, that beautiful looking jersey that everyone is going to be playing for. Beautiful looking jersey in the inaugural UPT20. So first up, could I please have one representative from the Gorakhpur Lions to come up and collect their team jersey? Beautiful looking jersey that's going to shape the careers of so many young and aspiring cricketers in Uttar Pradesh. Thank you so much. Thank you. Yeah, please stay here. Next up, one representative from the Kanpur Superstars.
the orange jersey that every young kid in Kanpur will be vying for. A chance to showcase their talent at the biggest level. A chance to move on to another level. And it all starts here at the UP T20. Thank you, sir. Next up, one representative from the Kashi Rudras, please. So in true Annu Malik style, आप लोग आग लगा दी आपने in that jersey. Beautiful looking jersey. That's the Kashi Rudras for you. Thank you so much. Next up, a representative from the Lucknow Falcons, please. Could you come on this side, please? Yeah. Thank you so much. 3 on each side. Next up, a representative from the Meerut Mavericks, please. The Meerut Mavericks, ladies and gentlemen, all blue jersey for the Meerut Mavericks. And finally, could someone come up from the Noida Super Kings to come up and collect their jersey, please? The Noida Super Kings, ladies and gentlemen. Yellow and green, and that makes up the 6 teams that will be competing in this first edition of the UP T20. Those are the 6 teams, the 6 jerseys that will be fighting for that beautiful trophy in the first edition of the UP T20. Putting dreams into the eyes and minds of so many young cricketers who have ambitions of playing big, who have ambitions of showcasing their talent at the very biggest stage. And it's courtesy of people like these, courtesy of Sir, that those dreams can be fulfilled, that those young kids can dream with their eyes open, with their eyes big. Now may I please ask Mr. Rajiv Shukla and Shri D.S. Chauhan, if you could please come up on stage, sir, for a photo op with all the team owners and their jerseys. There you have it, ladies and gentlemen, the people involved, the people who've made this possible, this very first edition of the UP T20. These are the people that have made this possible. A big round of applause, not just from your side, but from the whole of Uttar Pradesh and all the young children that want to play cricket. These are the people that are making those dreams possible. Round of applause for every one of them, please. Yep. And also, may I please get around members of the Uttar Pradesh Cricket Association to kindly come up on stage and join us for the photo op as well, please. The Uttar Pradesh Cricket Association that has given so much to budding cricketers in this state. So many top athletes, so many top cricketers have come out from Uttar Pradesh in these last 10 years, like Mr. Shukla mentioned. Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Mohammad Kaif, Rinku Singh, Suresh Raina, and we're hoping that's not the end of it. We're hoping that's only the start, because a brand new platform is being given to the next Suresh Raina, to the next Mohammad Kaif, to the next Rinku Singh to come out on the big stage and showcase their talent.
These are the people that have made the first edition of the UP T20 possible. Thank you, sir. Thank you so much. If I could request Mr. Shukla and Shri D.S. Chauhan, sir, if you could stay on stage with us. We're just setting up a table for a question and answer round with members of the media. Please give us a minute, sir. The floor is going to be open for the members of the media now to come and throw some questions at the way of Mr. Shukla and Mr. Chauhan. Just a request to members of the media to kindly maintain your questions to the event and only the event. Anything outside of the event, unfortunately, I won't be able to take your questions to them. मीडिया के लोग आगे की सीटों पे आ जाएं, वहाँ पे पीछे से ये सीट इधर खाली करवा दो, है ना, तो वो लोग आ जाएंगे. Just a request to all the members of the media, kindly maintain your questions to the event. Please do not go outside of the event. Unfortunately, I won't be able to take your questions to sir. Whoever has a question, kindly raise your hand. We have mics and a mic will be handed over to you. Kindly introduce yourself, the media house you're representing, and please do go ahead and ask your question then. As sir mentioned earlier, members of the media, you play a big part in the success of this inaugural edition of the UP T20. You need to play a part. You need to help this grow. Hello. Take it to a new level. Something that can give back so much to this beautiful state. हेलो हेलो मेरा एक सवाल है राजीव शुक्ला सर से. Could you kindly introduce yourself, please? And आप कौन से media house से? Are we ready for the question answer? Yes. May I know who's asking the first question, please? Yes, idhar. Left side. So, could you kindly introduce your name and the media house, please? We can start, sir. मेरा नाम ऋषि मिश्रा है, मैं ATV से हूँ.
राजीव शुक्ला जी से मेरा सवाल था कि जिस तरह से जयशाह जी वुमेन क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में वुमेन यूपीपीएल जैसी कोई कल्पना संभव है? निश्चित रूप से बीसीसीआई जो है उसने वुमेन क्रिकेट को अडॉप्ट किया था कोई 10-15 साल पहले। उसके बाद हम लगातार उसको बढ़ाते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमने जो है भारतीय महिलाओं को बहुत अवसर प्रदान किए हैं और उनकी जो वो फी है वो भी हमने पुरुषों के बराबर कर दी है और इसमें जयशाह जी का बड़ा योगदान है। तो उनकी ये परिकल्पना थी जिसको हम लोगों ने साकार किया है, तो वो लगातार उनका सहयोग मिलता रहता है। तो वुमेन क्रिकेट को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमें पर्याप्त संख्या में महिला खिलाड़ियाँ मिलती हैं, कई राज्यों में मिलती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे गुजरात है, सौराष्ट्र है। तो इस तरह से एक जो वो पूरा एक माहौल बनना चाहिए, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम महिला क्रिकेट को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये निश्चित रूप से जो है तय है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, is there anyone else who would like to ask a question? मेरा नाम अमित कनौजिया है, मैं दूरदर्शन न्यूज़ का एडिटर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, who are the marquee players for this gala event and other states players can play here or is just restricted to only UP players? Well, when BCCI had envisaged the concept of letting state confined leagues, so it had been decided and the provision had been made only the players belonging to that state or registered in that state can play. The supporting staff will also be from that state itself. So obviously in UP Cricket League, UP T20 Cricket League, only the players from state or registered in state can play. That's very clear. What about the marquee players? Like who are the African players for the different franchises? Now we have got many marquee players. As you know, that we have got minimum 12 IPL players. A number of other players who have played IPL in the past also. Those are also there. We have got international players. In fact, in my speech I had already mentioned, now there is no India team which hasn't got player from UP. So that's going to be the strength in USP of our T20 league. We have got lot many marquee players. I think we have been covering sports for long, so you know all the names also. So it's better you spell out all the names, but you know the names. So lot many players who are marquee players, they'll be playing, and that's why in the first year, when we are going to allocate the players, there'll be draft system by which two marquee players will be given to. मयूर शुक्ला फ्रॉम जी न्यूज़। सर, ये जो आयोजन हो रहा है, क्या कोई टैलेंट हंट टाइप की कोई ऐसी आयोजन आगे होगा जिससे कि गांव के या स्कूल कॉलेजेस के जो लड़के हैं वो निकल के आए, उनको इसमें मौका मिले? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो है ये दरअसल इसकी बुनियादी टैलेंट हंट है। मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि होता क्या है कि हम टीम तो 15 की बना सकते हैं, हजारों लड़के ट्रायल में आते हैं। इसीलिए आपने देखा उत्तर प्रदेश में टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ के तमाम लड़के, कोई बंगाल से खेल रहा, कोई राजस्थान से खेल रहा, कोई मुंबई से खेल रहा, कोई गुजरात से खेल रहा, कोई कहीं से खेल रहा, कोई कहीं से खेल रहा, क्योंकि हम इतने लड़के अकोमोडेट नहीं कर सकते और वो जो है प्रतिभा सब में है। तो इसलिए जो है हमने ये शुरू किया कि इसमें कम से कम 150 लड़कों को जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अवसर मिलेगा और इसे साल दर साल वो बदलते रहेंगे। तो इसलिए जो है ये एक तरह से टैलेंट हंट ही है, और टैलेंट हंट के लिए ना फ्रेंचाइजी भी अपनी स्काउटिंग करेंगे, वो भी खोजेंगे आगे से। अभी तो उनको ड्राफ्ट से मिल रहा है, आगे वो जो है स्काउटिंग करेंगे अपने प्लेयर्स की, जैसे कि आईपीएल के फ्रेंचाइजी करते हैं, ये लोग भी करेंगे। और उन सबको देखते हुए काफ़ी हमारा पहले भी एक टैलेंट रिसर्च टीम है जो इस दिशा में काम करती है यूपीसीए की। तो वो निश्चित रूप से आपकी बात सही है। आज तो 80% लड़के जो हैं, मैंने बोला ना कि दे कम फ्रॉम मोस्ट हम्बल बैकग्राउंड, मीन्स कि वो बहुत गरीब घरों से आते हैं। और मैं एक नहीं 10 उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जब अपने आज की यूपी की टीम जो है या वहाँ बाहर खेल रहे हैं, कोई अरबपति खरबपति का बेटा नहीं है, करोड़पति का बेटा नहीं, इक्का दुक्का को भले छोड़ दें, बाकी सब गाँव गरीब के लोग हैं, बहुत मध्यम वर्ग से या निम्न मध्यम वर्ग से लोग आते हैं। तो इन सबको अपार जो है अवसर मिलेंगे। सर, मेरा नाम शबाब है, न्यूज़ 18 से हूँ मैं। और आपने जो बात कही कि यूपी में इतना टैलेंट है, दूसरे स्टेट से जा कर के खिलाड़ी खेल रहे हैं,
यूपी के एक मिनिस्टर रहे हैं मोहसिन रजा, वो लगातार इस बात को लेकर के चिट्ठी लिखते रहे हैं कि जिस तरह रणजी में एक राज्य की कई टीमें खेल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में इतना टैलेंट है तो क्यों नहीं 2 टीमों के चयन को लेकर के कुछ सोचा जा रहा है या खिलाड़ियों को इससे ज़्यादा मौका मिल सकेगा, इस तरीके का कोई प्रपोजल है? मोहसिन भाई जो है हमारे भी दोस्त हैं, है ना, तो उनसे बोलो कि उनका प्रभाव है तो 2 नहीं 3 टीम करवा दें, लेकिन समस्या ये हो नहीं सकता, ये असंभव काम है। इसलिए क्योंकि जो है ये बिल्कुल बीसीसीआई ने सब डिसीजन लिया और इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। और सुप्रीम कोर्ट का जब लोढ़ा कमेटी रिफॉर्म्स हुए थे तो लोढ़ा कमेटी रिफॉर्म्स में आए, उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 3 लगातार जजमेंट, जिसमें उन्होंने जो बीसीसीआई की मेंबरशिप है वो उन्होंने फिक्स कर दी, जिसमें यूपी की एक ही टीम रहेगी। आप वो उसमें उदाहरण दे सकते हैं कि जब गुजरात की 3 हो सकती, तो गुजरात की 3 टीमें शुरू से हैं, गुजरात, सौराष्ट्र और बड़ौदा। वो जब क्रिकेट बहुत कम जगह सीमित था तो गुजरात में कई राजा महाराजाओं ने क्रिकेट की शुरुआत की थी। वो सब ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने उनको 3 जगह पे 3 क्षेत्रों से उनको करके ये दी थी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 3 है, वो भी पहले की हैं। तो ये सब जो पहले के थी फिर उनको जो है बीसीसीआई ने इसने सुप्रीम कोर्ट ने रिटेन किया, और जो दो एक क्लब था नेशनल क्रिकेट क्लब ऑफ कलकत्ता, उसकी मेंबरशिप उन्होंने हटाई, एसोसिएट कर दिया, बाकी को एसोसिएट कर दिया, लेकिन रेगुलर मेंबरशिप को तो मेंबरशिप का इशू सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी है। इसलिए अब इसमें मेरी दृष्टि से तो नहीं किया जा सकता, अनलेस कि कोई राज्य का हिस्सा निकल, जैसे उत्तराखंड गया तो उत्तराखंड की टीम हो गई, तब तक ये नहीं किया जा सकता है। अगर वो करा सके तो मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। Just a request, please, to members of the media to please keep your questions to the event. We'd appreciate it if you would. No, they can ask free will questions. I don't mind, you know. Okay. Any question they can ask. Okay, but sir. better to ask about The event. T20 league. Chavan sahab can respond about T20 league. Okay. Yes, please. Yeah, Mr. Shukla, this is Sahil from Network 18. Sir, you just mentioned that the league is about growing players in the state, but this morning a poster went up where Nitish Rana's photo was there. He played for Delhi. So I just want to understand rules wise, because you said that players registered with UP will only be playing this league. So how does Nitish Rana become eligible even as a professional, because he wouldn't be registered as a player yet? Well, you know, Nitish Rana, he had taken NOC from Delhi, DDCA, and now he has, you know, expressed his desire to play for UP. So he's being registered in UP. BCCI has also given permission to get him registered in UP. So he'll be playing from UP now onwards. Hi sir. Sir, this is Harshit from Times Now. सर, जैसे कि आपने बोला कि यूपी के रजिस्टर्ड प्लेयर्स खेलने वाले हैं, सो आई एम जस्ट वांट टू नो कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो यूपी को बिलोंग करते हैं बट वो अदर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रणजी में, जस्ट लाइक शमी या पीयूष चावला, तो क्या उन लोगों को भी एलिजिबिलिटी है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए? ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनको नहीं है। अगर यूपी में फिर से रजिस्टर्ड हो जाएं वो, तो निश्चित रूप से उनको मिलेगी। ये तो अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए, तो हमारे उससे लीग की हमारी शोभा और गरिमा बढ़ेगी। तो मैं तो चाहूँगा कि लोग यहाँ आएँ, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली दे आर रजिस्टर्ड विद अदर स्टेट्स, सो एज पर BCCI प्रोविजंस एंड रूल्स वी कांट लेट देम प्ले हियर. I want it. I reiterate that I want them. राजीव सर, क्या वर्ल्ड कप को देखते हुए लखनऊ में कोई मुकाबला नहीं होगा इस लीग का? देखिए, हमने तो जो अभी तय किया है, क्योंकि लखनऊ में लगातार मैचेस होते रहते हैं, कानपुर हेरिटेज ग्राउंड है तो हम कानपुर में रखें, तो अगर कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे कि तमाम तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, अगर तकनीकी समस्या कोई आई, बड़ी समस्या आई जिससे मुझे दिक्कत हुई, उस दृष्टि से जो है हम कुछ मैचेस भले लखनऊ शिफ्ट कर सकते हैं, अभी नहीं है। अभी तो हमारा पूरा आयोजन कानपुर कराने का है और हम राज्य सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमें कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में इसको कराने की अनुमति दी जाए। और लखनऊ को हमें जो है कोई 12 सितंबर को हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि 12 सितंबर से यहाँ पहला मैच 12 अक्टूबर को है वर्ल्ड कप का। तो हमें खुशी है कि वर्ल्ड कप का आयोजन उत्तर प्रदेश में इस व्यापक पैमाने पर हो रहा है,
और इसके लिए मैं बीसीसीआई के सारे पदाधिकारी, रोजर बिन्नी, जयशाह जी, सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें प्राथमिकता देकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ये मैचेस दिए हैं। तो मैं जो हूँ 12 सितंबर तक ही अगर कुछ लीग के मैचेज यहाँ हो सकते हैं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम है। So Rajiv sir, if I can ask you something on similar lines, like it's not related to the league but just on the World Cup, if I can ask him. It'll be short. It'll be short. Sir, there's a report today where हैदराबाद के मैचेस को लेकर कुछ इशू हुआ है कि वहाँ पे बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं तो सिक्योरिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम है. So have you heard something on those lines? Is there a possibility of change in schedule for the World Cup or everything will remain as it is? Well, from BCCI side, I've been made in charge of Hyderabad and Bangalore venues. So, you know, shortly I'll be undertaking a visit to Hyderabad and will look and try to resolve all the issues. I don't think it's possible to change the schedule, but we will definitely address all the issues which are arising out there. But one thing you must be aware that schedule cannot be easily changed by BCCI alone. We need to take consent of ICC as well as the playing nations who will be participating in the game. So it's not that easy thing that you, just for whip of the things you can change the schedule. So that's not going to happen. But if there are any issue, so far it has not been reported to me the moment Hyderabad Cricket Association, because now is being looked after by a Supreme Court judge, retired judge. So if he reports anything to me, then I will definitely address and get it resolved. Are there any more questions for Mr. Chauhan, for Rajiv sir? हमारे साथ चौहान साहब हैं, इनको क्रिकेट से बहुत प्यार है और हमेशा ये पुलिस में भी थे. ये वॉज डायरेक्टर जनरल पुलिस, ऑल्सो डायरेक्टर विजिलेंस एंड डायरेक्टर इंटेलिजेंस, बट ही इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड, कमिटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट. सो वी हैव मेड हिम द चेयरमैन ऑफ दिस लीग एंड ही इज, you know, it's as it is, he is working for it and spending lots of time to make this league successful. चौहान साहब, एक सवाल आपसे था कि आप इतने समय पुलिस अधिकारी रहे, तो ये जो लीग हो रही है, पुलिस में भी बड़ी संख्या में जवान क्रिकेट के शौकीन हैं और प्रतिभावान भी हैं, क्या उधर से भी कुछ टैलेंट हंट की संभावना है? जो लीग का फॉर्मेट रखा है उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये लीग बेसिकली क्रिकेट को एनकरेज करता है. यूपी में जो हमारे टीम फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, ये क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एकेडमीज़ को क्रिएट करेंगे, पिचेस को क्रिएट करेंगे, खिलाड़ियों को कोच करेंगे, बढ़ावा देंगे. तो वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला कहीं किसी भी विभाग का खिलाड़ी हो, किसी भी समाज का हो, वो उसमें जाने के लिए वेलकम है. उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जानते हैं पहले से ही हमारा एक इंटर जोनल टूर्नामेंट होता है और कई अच्छे खिलाड़ी हैं जो पुलिस विभाग में खेलते हैं. अभी एक टीम फ्रेंचाइज में जो कोच डायरेक्टर के रूप में लिए गए हैं विश्वजीत सिंह, वो यूपी पुलिस से सदस्य हैं और यूपी रणजी खेले हैं. तो यूपी रणजी में इस तरह से खिलाड़ियों ने पुलिस विभाग की तरफ से पार्टिसिपेट किया है और द टैलेंट है तो आप खेल सकते हैं. राजीव सर, Provided they are registered with the association. राजीव सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने आईपीएल में देखा है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल इंट्रोड्यूस हुआ, तो यूपी T20 लीग में भी क्या हम ऐसा कुछ देखेंगे? और क्या अंडर 19 प्लेयर्स के लिए कोई रिजर्व स्लॉट होंगे प्लेइंग 11 में या फिर टीम में, ऐसा कुछ? That's one issue which is in domain of the technical committee, tour fixture and technical committee of UPCA. So they will make their recommendation to the governing council and governing council will take a call. In case if they want to introduce, they can always do it. If they don't want, they can't do. So it's purely up to the governing council and the technical committee of the UPCA to take a call on it. So I leave it to them. Any more questions? Should I close the floor then? Thank you so much, members of the media, for your questions. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you so much, sir. थोड़ा पॉजिटिव कवरेज देना यार. Thank you.
Just to remind everyone that there is a draft later in the day when your teams will be put together. So we're taking a bit of a break now for the day's proceedings, and the draft will happen in some time from now. Thank you so much for joining us for this event. Just a reminder, the draft, we'd request team owners to kindly come back into this room at 2:30 p.m. That is when the draft will start for the inaugural edition of UP T20. I'll remind you again, 2:30 p.m. We'd request all team owners to kindly come into the same ballroom. Thank you so much. And just this one you might not want to listen to, but I'll have to say it nonetheless. If you're late, the draft still continues. So we request you all to please be on time because we're working on a very small time frame. 2:30 p.m. back in this ballroom. Thank you so much. चप्पे चप्पे बस यही बात दोहराएंगे, अब की बार के बल्लाधारी अंतरिक्ष तर्राएंगे, एक धरा पे गिरे जहां भीषण विस्फोट हो जाएंगे।